Hello students, I am Dr. Poonam from Dr. B.R. Ambedkar Government College, Shri Ganganagar. Today I will discuss the poem Lotus Eaters by Alfred Lord Tennyson और ये पोएम प्रेस्क्राइब्ड है महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के BA पार्ट 2 के पेपर फर्स्ट में. As we are reading the text now, courage, he said, and pointed towards the land. This mounting wave will roll us shoreward soon. In the afternoon they came unto a land in which it seemed always afternoon. All round the coast the languid air did swoon, breathing like one that hath a weary dream. Full-faced above the valley stood the moon, and like a downward smoke the slender stream along the cliff to fall and pause and fall did seem. A land of streams, some like a downward smoke, slow dropping, veils of thinnest lawn did go, and some through wavering lights and shadows broke, rolling a slumberous sheet of foam below. They saw the gleaming river seaward flow from the inner land far off. 3 mountain tops, 3 silent pinnacles of aged snow, stood sunset, flushed and dewed with showery drops. Up clomb the shadowy pine above the woven copse. Alfred Lord Tennyson was the poet laureate of Great Britain and Ireland during Queen Victoria's reign. He received his university education from Cambridge, and he is considered to be a representative Victorian poet as his poems reflect the different intellectual currents prevailed at that time. His poetry is also remarkable for its musical and pictorial qualities. Victorian poets की पोएम्स आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड हैं पेपर फर्स्ट में. So Tennyson is also a leading Victorian poet, and this poem is The Lotus Eaters is also in your syllabus. So the lotus is an African plant. यहाँ पर लोटस कमल नहीं है. इसका मतलब लोटस means it doesn't mean कमल, but this is a different plant, the different African plant with the Indian lotus. So it is not to be, we should not to be confused with the Indian lotus. It is a low thorny shrub, एक कांटे की झाड़ी जैसा है. It is still prized at Tunis and Tripoli under the name of Zuzube. This plant was supposed to possess the magical virtues. जब इस प्लांट में इतने मैजिकल वर्च्यूज़ हैं कि इसको कोई खा लेता है तो वो हर चीज़ को भूलने लगता है इसको खाने के बाद, इस प्लांट को खाने के बाद. So there are so many magical virtues in this plant of making man forget his past life. He forgets his past life. Man forgets his past life when he eats this plant, and also causing a feeling of languor and world weariness to those who ate them. Because the mariners say, surely, surely, slumber is more sweet than toil. Surely, surely, slumber is more sweet than toil. The main idea underlying the poem is simple enough. It is very simple. बहुत simple idea है. After 10 years of hard and strenuous fighting in Troy, the companions of Ulysses on their return voyage land on the country of the Lotus Eaters. The scenery of the place intensifies their moods of indolence and sorrow as well as of love. बहुत वर्षों तक फाइटिंग करने के बाद यूलिसीज के जो फ्रेंड थे, जो साथी थे, वो कहाँ पहुँचते हैं?
in the land of lotus land. So here Ulysses tells his mariners to have courage, assuring them that they will soon reach the shore of their home. वह श्योर करता है कि आप जल्दी ही हम अपने घर पहुंच जाएंगे, अब हमें हिम्मत रखनी चाहिए. यूलिसीज सेज टू हिज मैरिनर्स कि हमें हिम्मत रखनी चाहिए, हम अपने घर जल्दी ही पहुंच जाएंगे बहुत लंबे समय की लड़ाई लड़ने के बाद. In the afternoon they reach a land in which it seemed always afternoon. एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं वो, वहाँ पर अपनी ट्रैवल करते करते ड्यूरिंग देयर वॉयस ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर आफ्टरनून है, हमेशा आफ्टरनून जैसा लगता है, इवनिंग की तरह से एटमॉस्फेयर लगता है, बिकॉज ऑफ द लैंग्विड एंड पीसफुल एटमॉस्फेयर, बिकॉज द एटमॉस्फेयर इज़ वेरी लैंग्विड एंड पीसफुल टू ऑफ दैट लैंड. द मैरिनर्स sight this land of streams with its gleaming river flowing to the sea. There was a very beautiful river, its 3 snow-capped mountain tops and its shadowy pine growing in the vale. The mariners are greeted by the mild-eyed melancholy lotus eaters, whose dark faces appear pale against the rosy sunset. These lotus eaters come bearing the flower and fruit of the lotus. जो lotus eaters के land में वो पहुँचे मैरिनर्स, तो बहुत ज़्यादा थके हुए थे, बहुत वर्षों की लड़ाई उन्होंने लड़ी, बहुत सारे वर्ष लड़ाई लड़ते लड़ते बहुत ज़्यादा रन डाउन हो चुके थे. उनके लिए वो लोटस के प्लांट ऑफ़र करते हैं. लोटस ईटर्स के लैंड में पहुंच जाते हैं मैरिनर्स, और उनको वो लोग जो वहाँ के लोग हैं वो लोटस के प्लांट ऑफ़र करते हैं. एंड दे ऑफ़र टू यूलिसिस मैरिनर्स, दे ऑफ़र द प्लांट्स. Those who eat the lotus feel as if they have fallen into a deep sleep. They sit down upon the yellow sand of the island and can hardly perceive their fellow mariners speaking to them. Hearing only the music of their heartbeat in their ears. उनको कुछ भी सुनाई नहीं देता, केवल अपनी हार्ट बीट सुनाई देती है, और वो सोचते हैं कि हम बस लेट जाएं और सो जाएं और हम रेस्ट करें. उनकी घर जाने की अपनी इच्छा अब नहीं रही. Although it has been sweet to dream of their homes in इथाका, इथाका में उनके घर हैं, वो उसका ड्रीम ले रहे हैं. The lotus makes them weary of wandering, preferring to linger here. One who has eaten of these lotus fruits proclaims that he will return no more. And all of the mariners begin to sing about this resolution to remain in the land of the lotus eaters. अब वो क्या सोचने लगे कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, we will remain in the land of lotus eaters. The rest of the poem consists of the 8 numbered stanzas of the mariners' choric song. Choric song. As you see, here is the choric song. There is sweet music here that softer falls than petals from blown roses on the grass, or night dews on still waters between walls of shadowy granite in a gleaming pass. Music that gentler on the spirit lies than tired eyelids upon their eyes. Music that brings sweet sleep down from the blissful skies. Here are cool mosses deep, and through the moss the rivers creep, and in the stream the long-leaved flowers weep, and from the craggy ledge the poppy hangs in sleep. So the rest of the poem consists of the 8 numbered stanzas of the mariners' choric song, and they express their resolution to stay forever there.
First, they praise the sweet and sporaphic music of the land of the lotus eaters, comparing this music to petals, dew, granite, and tired eyelids. In the second stanza, they question why man is the only creature in nature who must toil. वो कहते हैं कि हमेशा मनुष्य इतनी मेहनत क्यों करता है। इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं सबसे ज़्यादा मेहनत मनुष्य क्यों करता है। वो इस बात का क्वेश्चन करते हैं और इस बात से दुखी हो जाते हैं क्योंकि क्यों इतना टॉयल मनुष्य को ही दिया हुआ है। दे आर्ग्यू दैट एवरीथिंग एल्स इन नेचर इज़ एबल टू रेस्ट एंड स्टे स्टिल। वो सोचते हैं, वो देख रहे हैं नेचर में नदी बह रही है, पेड़ पौधे फूल पत्ती प्लांट सब कुछ वहाँ पर हैं। दे आर स्टिल, दे आर लाइंग, दे आर रेस्टिंग, बट मैन इज टॉस्ड फ्रॉम वन sorrow to another. Man's inner spirit tells him that tranquility and calmness offer the only joy, and yet he is fated to toil and wander his whole life. मैरिनर सोचते हैं कि हम पूरी ज़िंदगी इधर उधर भटकते फिरते रहते हैं। ऐसा मनुष्य के ज़िंदगी में क्यों लिखा हुआ है, उसके भाग्य में, उसकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। एंड इन द थर्ड स्टैंजा द मैरिनर्स डिक्लेयर दैट एवरीथिंग इन नेचर इज अलॉटेड अ लाइफ स्पैन इन विच टू ब्लूम एंड फेड एज एग्जाम्पल्स ऑफ अदर लिविंग थिंग्स दैट डाई. They cite the folded leaf which eventually turns yellow and drifts to the earth, as well as the full juiced apple which ultimately falls to the ground, and the flower which ripens and fades. Next, in the fourth stanza, the all the mariners question the purpose of a life of labor. Since nothing is cumulative and thus all our accomplishments lead nowhere, they question what will last. वो सोचते हैं कि आखिर हमारा क्या होगा, अंत में हमारा क्या होगा। Proclaiming that everything in life is fleeting and therefore futile. फिर वो क्या विचार करते हैं कि हर सब कुछ इस जीवन में व्यर्थ है, निरर्थक है। Everything is futile in this life. The mariners also express their desire for long rest or death. वो कहते हैं या तो हम बहुत लंबा रेस्ट करना चाहते हैं या फिर हम मर जाना चाहते हैं। They wish to die, either of which will free them from a life of endless labor. क्योंकि वो इतने थक चुके हैं बिल्कुल बहुत वर्षों के युद्ध के पश्चात कि वो सोचते हैं कि ये हमारा, अगर हम मर भी जाएंगे तो ये हमारा जो एंडलेस लेबर है वो ख़त्म हो जाएगा। हम हमेशा युद्ध करते रहते हैं, एंडलेस लेबर करते हैं, इट विल एंड आफ्टर आवर death. And the fifth stanza echoes the first stanza's positive appeal to luxurious self-indulgence. The mariners declare how sweet it is to live a life of continuous dreaming. They point a picture of what it might be like to do nothing all day. वो ऐसा इमेजिन करते हैं कि कैसा लगता होगा अगर हम पूरा दिन कुछ भी ना करें और केवल आराम करें। और all day we should rest, we dream, we eat lotus, so and watch the waves of the beach. और वो बीच पर लेटे रहना चाहते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं। Such an existence would enable them peacefully to remember all those individuals they once knew who are now either buried. In the sixth stanza, the mariners reason that their families have probably forgotten them anyway. एक बार वो सोचते हैं कि हम अपनी फैमिलीज़ के पास जाएं। वो बहुत ज़्यादा उत्साह से जब युद्ध से लौट रहे थे तो वो सोच कर आ रहे थे कि हम अपनी फैमिलीज़ से मिलेंगे, हम जाएंगे, अपने घर जाएंगे, हमारी फैमिलीज़
हमारे बच्चे, हमारे बेटे, हमारे सब हमें देखकर बहुत प्रसन्न होंगे, लेकिन वो अब ये सोच रहे हैं कि वो तो हमें भूल चुके होंगे। एंड दे आर थिंकिंग देयर होम्स fallen apart. So they might as well stay in the land of the lotus eaters and let what is broken so remain. Although they have fond memories of their wives and sons, surely by now, after 10 years of fighting in Troy, they have been fighting in Troy for 10 years. Their sons have inherited their property. It will merely cause unnecessary confusion and disturbances for them to return now. वो सोच रहे हैं 10 वर्षों के युद्ध के बाद अब हमारे बच्चों ने हमारी प्रॉपर्टी पर भी अधिकार कर लिया होगा और अब वो डिस्टर्ब फील करेंगे अगर हम वापस जाएंगे तो। ये सारी फीलिंग्स कैसे उनको आती है मैरिनर्स को? केवल लोटस प्लांट खाने के बाद। देयर हार्ट्स नाउ आर worn out and from fighting wars and navigating the seas by means of the constellations, and thus they prefer the relaxing death like existence of the land of the lotus to the confusion that a return home will create. It would create the confusion. If they will return home, it will create the confusion for their families, to their children. So they decided not to return to their homes and they decided to live their rest of the life at the lotus eaters land. Thank you very much.